हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और ये पार्ट 5 वीडियो है जिसमें हम लोग आरसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दो आरसी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। 7 जनवरी 2025 का ये पीवाईक्यू मॉक टेस्ट डिस्कस किया जा रहा है जिसमें का ये पार्ट 5 है। आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, जिसको भी जिस आपको अगर जो भी हेल्प मिल रही हो और कोई आपका और भी फ्रेंड हो जो प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसको भी आप ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो फिर इस आरसी को रीड करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, किस टॉपिक पे ये आरसी है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको रीड करते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे बैंकिंग के रिगार्डिंग, अब देखिए यहीं से पता चल गया कि किसके रिगार्डिंग ये आरसी है। द फर्स्ट फेज ऑफ मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया बिगेन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 when the government nationalized the major banks and introduced various reforms to promote financial inclusion and social welfare. The second phase started in 1990s when the liberalization of the economy and the advent of the technology enabled the emergency of a new private and foreign banks offering competitive and innovative products and services to the customer. In the 2000s, the third phase commenced when the internet and mobile penetration increased, leading to the rise of online and mobile banking as well as the entry of non-banking financial companies and fintech startups offering digital solutions to cater the unbanked and the underbanked segments of the population. The fourth and current phase of banking in India is characterized by the emergence of neo-banks, which are digital only banks that operate without physical branches and offer a range of banking and financial services through mobile apps and web platforms. Neo-banks often function by partnering with licensed bank to provide their services to customers. While the digital banking landscape in India is evolving rapidly, there are still many challenges and gaps that needs to be addressed. One of the major challenges is the lack of standardization and interoperability among the various players, platforms, and systems in the ecosystem. For instance, there are multiple payment methods such as UPI, IMPS, NAFTA, RTGS, car wallet, and QR codes, each with its own features, limitations, and charges. This creates confusion and inconvenience for customers who have to switch between different apps and interfaces to make payment and access their account. फिर उसके बाद artificial intelligence is a potent technology that can help digital banks to overcome the challenges and gaps mentioned above and add value to their customer and stakeholders. AI can enable digital banks to leverage data and analytics, machine learning, natural language processing, computer vision, other advanced technology to automate and enhance various banking processes such as customer identification, verification, customer service and support, product recommendation and cross selling, fraud detection and risk management, credit scoring and underwriting and regulatory compliance and reporting, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आरसी रीड कर लिया, बैंकिंग के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ न्यू बैंक्स इन इंडिया। तो नियो बैंक्स का प्राइमरी यहाँ पे क्या, विच डिजिटली ओनली बैंक्स एंड ऑपरेट विदाउट फिजिकल ब्रांच, ऑफर अ रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल केटरिंग टू द अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक, ठीक है। ये यहाँ पे लाइन आई थी, अनबैंक्ड और अंडर बैंक। देखिए कहाँ पे आई थी ये लाइन, प्लेटफॉर्म्स फॉर देयर आर, यहाँ पे लाइन ये आई थी, ये हाँ, कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड ऑफरिंग डिजिटल सोल्यूशन टू केटर द अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये न्यू बैंक की रिगार्डिंग यहाँ पे देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा केटरिंग टू द अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड सेगमेंट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 92। हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प डिजिटल बैंक टू ओवरकम चैलेंजेस? रिड्यूसिंग इंटरनेट, बाय इंक्रीजिंग फिजिकल ब्रांचेस, नहीं, बाय प्रोवाइडिंग एडवांस एनालिटिक्स। ठीक है। व्हाट मार्क द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड फेज? सेकेंड फेज में क्या हुआ था? लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंट्रोपैरेबिलिटी इन द डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम? कंफ्यूजिंग एंड इनकन्वीनियंस, ये लाइन आई थी। ठीक है, ये जो अभी रीडिंग करी थी तो इसमें ये लाइन आई थी। व्हाट इज द वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन द डिजिटल बैंकिंग लैंडस्केप इन इंडिया? ठीक है, तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इंट्रोपैरेबिलिटी, ये भी लाइन आई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आरसी देख लेते हैं। नेक्स्ट आरसी किसके रिगार्डिंग है? ठीक है। द मेजर देखो, सोर्स फॉर द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये टैक्स के रिगार्डिंग यहाँ पे आरसी है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टमर, CBIC, erstwhile Central Board of Excise and Custom, is the apex regulatory body that supervises the levy and administration। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि erstwhile सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी that supervise the levy and administration of indirect taxes in India. CBIC is a part of the Department of Revenue under the Ministry of Finance, Government of India. It deals with the task of formulation of policy concerning levy and collection of customer, central excise duties, central goods and service tax, and IGST, prevention of smuggling, and administration of matter relating to customer, central excise, central goods and service tax, IGST, and narcotics to the extent under CBIC purview. The board is the administrative authority for its subordinate organization including Custom House, Central Excise and Central GST Commissionerate, and the Central Revenue Control Laboratory. In recent year, the India government has undertaken significant reforms under the indirect taxation system. This includes the implementation of goods and service tax. Goods and service tax is an indirect tax, has replaced many indirect tax in India. The goods and service tax was passed in the Parliament of March 29, 2017. This act came into effect on 1st July 2017. GST is a destination based consumption with the credit of tax paid at a previous stage is available as a set off. In nutshell, only value addition will be taxed and the burden of tax is to be borne by the final consumer। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने रीड कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये destination based tax on consumption means that tax would accrue to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption, which is also termed as a place of supply. GST has removed the cascading effect of taxes. This cascading effect implies charging tax on tax. In other words, at the time of levy of tax, the total value is considered, which is inclusive of all taxes paid to the point. In this manner, if the tax is always charged on the selling price of the product, the burden of tax keeps on increasing at each point of sales. In this process, the effect taxation magnifies as at each level tax is calculated on value, which includes taxes already levied and paid. The charging of tax on tax is called cascading effect of tax। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट डज द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स रेफर्स टू? तो इसका आंसर आ जाएगा चार्जिंग टैक्स ऑन टैक्स, ये हम लोगों ने अभी रीड किया।
ठीक है। और हु बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्स इन द जीएसटी सिस्टम? फाइनल कंज्यूमर। और how does GST eliminate the cascading effect of taxes by allowing tax credit on previous stages? What is the significance of the term destination based tax in the context of GST? Tax accrues to the taxing authority at the place of consumption। और फिर यहाँ पे 100 आ जाएगा कि what which department oversees the administration of matters related to customs, central excise, central goods and service tax, IGST and narcotics under the Indian government, Central Board of Indirect Taxes and Customs। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन कवर होते हैं। थैंक यू। और अभी एक न्यूमेरिकल पार्ट भी अपलोड करेंगे, जिसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें पूछे गए उनको भी सॉल्व करके ये मॉक टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब